in process. So we are live. So hello everyone. Myself Asutosh Kumar, IT expert and soft startup enthusiast. So let's welcome Mr. Madhav Misra, senior IT expert, uh, very passionate on Java and microservices technologies, latest technologies. He has also very sound understanding on artificial intelligence. So we are very very grateful for your presence, Mr. Madhav Misra. So our learners, our EduSakti team, whole team was very excited, and it was the most awaited. And I can feel the energy there. So people were requesting for this session for a long time actually. So now the wait is over. So I would love to welcome you. Please give your short introduction about today's session. So, uh, what do you feel? What do you think? Hey, good morning, Ashutosh ji, and good morning, everyone who all are watching us live and who will watch us maybe once the live will over then also. So, thanks everyone for joining. Today we are going to talk about microservices part two, and since it is a morning, so I thought to have these sessions in the morning and can start with this glimpse. So, therefore, we have been connected here. Yeah. Yeah, Astoshji. So let's start the real content of this. Yeah. So, I want to say one thing before starting, that this session is going to be very valuable and very important session. So, please stay tuned, share it with maximum people you can, so that they get the benefit. So the needy, who are preparing for jobs, who are looking for better packages in industry. So this is going to be a very important session. Definitely. This is one of the key trendy sessions which is demanded in the market right now at present. If somebody who is in Java and going in the market to hunt the jobs, definitely these sessions will more valuable for those aspirants. यहाँ से कहानी चालू होती है कि आप जावा पे आप नौकरी करने जा रहे हैं, तो जावा के 1 साल 2 साल और क्रमशः फ्रेशर्स को भी ये सेशंस काफी लाभान्वित करने वाले हैं कि आपको आने वाले जो ट्रेंड हैं, कहानी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है हम लोगों की उसमें. Likewise, we have been moving to now artificial intelligence, right? But when you don't have the knowledge of Java with microservices, definitely it will not give you much hold. So you need to first start with all this. So definitely who all are going for looking for jobs, these sessions will be more useful for them. या certainly निश्चित रूप से. और यही एडु शक्ति एजुकेशन का आईटी टेक्नोलॉजी का पावर है. सो लेट्स स्टार्ट इट on the discussion on microservices. So I have a few questions requested by our learners. So I would like to ask it one by one. So first of all, can you please tell us that what are the Netflix components? Because in last session, what we discussed, you were mentioning about Netflix components, and you suggested us to go through these components, so you can have better understanding on microservices, right? So what are basically these components and why it is useful? What do you think? Right. So basically, Netflix is one of the uh, you can say framework, or you can say, yeah, I'm going to share my screen. So okay, thanks, Astos ji. So Netflix is one of the architecture which came very first in terms of microservices.
So we already talked about what is microservices, what is the drawback, what is the useful, what is the advantage. Now this time we are going to talk about how you can build a microservices, how you can think of creating microservices applications, and what all various different thought which you have to think before creating the microservices. So Netflix is one of the provider, you can say, one of the framework which gives lot of different components which you can use to build a microservices, to develop a microservices and then deploy it. There are various different frameworks as well available in the market, like Nginx is one of them. So today we are going to focus on we thought to start from the basic of it, which can help the people to understand the microservices a little bit from these sessions, right? I mean, so that सी हमारे पास वैसे भी ऑडियंस है जो कि बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे है, बहुत फ्रेशर्स हैं, कुछ अलग स्ट्रीम के लोग हैं, कुछ एक्सपीरियंस वाले भी हैं, कोई दूसरे डोमेन का एक्सपीरियंस है कई लोगों को। तो हमारी जो सोच थी वो ये थी कि भैया हम जब चालू कर रहे हैं तो हम उस ऑडियंस को हिट करें जो कुछ भी नहीं जानता है, जिसको माइक्रो सर्विसेज का एम भी नहीं पता है। तो वहां से चालू करने के लिए हमने सोचा था। तो जब हम इंटरैक्टिव सेशंस में आएंगे, अभी आजकल तो हम लोग लाइव आ रहे हैं, we are focusing on coming on live. So in a month or 15 or 20 days we are going to come इंटरैक्टिव सेशंस, जिसमें हम ऑडियंस से सीधी सीधी बात करेंगे और एक क्लासरूम वाला फील आएगा आपको। लेकिन ये सेशंस लाइव में इसलिए मैं लाया हूं कि बहुत इंटरव्यू आप लोग देते होंगे या देने जाते होंगे या काम भी करते होंगे, तो ये चीजें आपको अकर होती होगी कि भैया कैसे बनाओगे माइक्रो सर्विसेज। तो इसके टर्मिनोलॉजी आपको दिमाग में सेट हो जाए, जब हम इंटरैक्टिव पे आए तो और डिटेल में इसके बारे में एलोबरेट करें। ठीक है आशुतोष जी, आपके क्वेश्चन के लिए आई एम कमिंग नाउ। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, सो 1 सेकेंड। लेट्स से what all different components we have in microservice, Netflix component gives to create a microservices. So 1 minute. Let Ashutosh ji, my screen is visible right now? Yes. Okay. Yeah, it's visible. All right. So we have 1 minute. Give me 1 minute. So we have, let's say, Eureka. I don't know. These lines are not coming properly. 1 minute. I'm deleting this. So we have a component called Eureka. Another component is there, Joule. Another Netflix component is there, which is known as Hystrix. The last component which we have named as Ribbon. So mainly we will talk about these 4 components today. What is Eureka, what is Joule, what is Hystrix, what is Ribbon. So these all are Spring Cloud Netflix component, which you can use to create your microservices using Spring Boot. And obviously you have to expose the services, you have to create the services, you have to consume the services, you have to think of maximize the request and minimize the response time. What I mean here is as many as request will come, that is fine. Maximum of request, minimum of the response, that the focus we have to think of कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जितने भी रिक्वेस्ट आए उसको रिस्पांस जो है बहुत ही ट्रेंडी वे में बहुत ही कम टाइम पे जाना चाहिए। तभी हमारा माइक्रो सर्विसेज का पैटर्न भी और लोग यूज कर पाएंगे। हमारे पास क्लाइंट भी आएगा कि भैया इसका जो सर्विस है बहुत फास्ट है। कई सर्विसेज होती है जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, लोग वहां से चले जाते हैं, उतना वेट नहीं होता आजकल की दुनिया में। तो जब आप सोचिए ना, नेटफ्लिक्स पे जाते हैं आप कोई वीडियो देखने के लिए, तो अगर कोई वीडियो सर्च किया
तो वो वीडियो अगर कम रिस्पॉन्स में नहीं आएगा तो आप प्राइम वीडियो में चले जाएंगे, आप सोनी लिव पे चले जाएंगे। तो नेटफ्लिक्स को ये जरूर एश्योर करना होता है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम किसी भी सर्च इवेंट के बाद बहुत ही फास्टर होना चाहिए। तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं कि हाउ टू सर्च, व्हाट ऑल एल्गोरिथम इज देयर, इलास्टिक क्या है या फिर सोलार क्या है, वो सब पे नहीं बात करना है। अभी बात करना है कि ये 4 कंपोनेंट हमारी मेजरली हमारी नेटफ्लिक्स देती है, जो आप किसी भी माइक्रो सर्विसेज को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इन चारों के अलग अलग यूज है, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में आऊंगा। इफ आशुतोष जी विल हैव सम क्वेश्चन अराउंड दीज ऑल, वी विल टॉक देम। Yeah, Ashutosh ji. You Sure, have sure. So Eureka. our learners have lots of questions actually. So before that, I would like to go for the next question. So you were mentioning about Eureka, right? Yeah. So I would like to have understanding on what is role about, means what Eureka have its role uh, in our microservices. So can you please tell us about the role part Okay. basically of Eureka? Okay. Fine. So the precise answer of this question is, let's say, take an example of banking domain. Okay. So we have a customer, we have a microservices like uh, customer producer, customer consumer. We have remittance, we have deposit, withdrawal. So these are 4, 5, 6 or multiple microservices, 9500 microservices. So what we thought to have to deploy it in a such a way so that we no need to remember every time where we have deployed, what has been done. So there is a concept which is known as service discovery, right? So where every microservices will be registered, you can say. 95 microservices you have built, you are going to deploy, you are going to register those microservices into Eureka server. What is the thought process behind bringing Eureka server is, consumer directly cannot connect with microservices. One microservices will not talk to another microservices because I do not want to leak out the IP and the port where the other microservices has been deployed. The security concerns are there. I cannot give the the IP address where the server has which server it has been deployed. So 95 microservices deployed to Eureka server, and I will talk to Eureka server, and then Eureka will further navigate the request to the desired microservices. So Eureka server is basically you can say front line for right now. When I will come to Joule, I will explain little more about Eureka and Joule combinations. But right now, for this question answer, Eureka is a service discovery where your all microservices will be registered, and whenever you want to interact with any of the microservices, you need to talk to Eureka server rather than connecting directly with other microservices. So ऐसे में क्या है, एक एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए मैं आईआईटी के किसी फैकल्टी को बात करना चाहता हूं या किसी से हेल्प लेना चाहता हूं, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली टॉक टू द फैकल्टी बीइंग नॉट एन स्टूडेंट ऑफ आईआईटी. I need to connect with the institutions, and institution will redirect my request to desired faculty who can help me, right? Depends on the request. So I cannot leak faculty contact number details and anything. That is not great idea to do that. Sometime that faculty might be changed. Let's say you deployed your microservices in such environment which got changed ideally, over a period of time. Something got changed, then you need to make a change. Let's say, for an example, now these are the detailed explanation. One has to think little curiosity and detail तरीके से आप सुनिए इसको. कंज्यूमर कस्टमर कंज्यूमर और कस्टमर प्रोड्यूसर दो माइक्रो सर्विसेज आपस में बात करनी थी. हमने क्या किया कि डायरेक्टली हम एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि कल के डेट में जहां पे प्रोड्यूसर डिप्लॉयड था उसकी चेंज लोकेशन हो गई,
या वो सर्विस डाउन हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या होगा वहां पे? फिर तो दिक्कत आएगी ना कि आपकी कंज्यूमर को रिस्पांस नहीं मिलेगा, या फिर लोकेशन चेंज हुआ कहेगा 404 नॉट फाउंड। तो हम डायरेक्टली, और आइडिया भी सही नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी माइक्रो सर्विसेज का आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर व्हाइट लिस्ट मतलब दे रहे हैं किसी को। सो आप उसको एक्सपोज नहीं कर सकते। आप उसको एक थर्ड पार्टी ले आते हैं, एक मीडिएटर है मेरे बीच में जो कि राउटिंग भी करेगा, किसके पास रिक्वेस्ट को भेजना है, और एक्सपोज भी नहीं करेगा। कुछ भी चेंजेस होगा तो हमको यूरेका में चेंज करना है, हमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यूरेका विल मैनेज ऑल दिस, routing and all this. So this is what the idea to bring the Eureka in the microservices pattern. श्योर Yeah. या सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड जिस तरीके से Yeah. आपने So one second, Ashutosh ji, one second. I'm explaining this through diagram also. Okay. So see, this is your customer consumer is talking to customer producer right now. So one-to-one call. Someday, sometime, this must be deployed somewhere, right? So if the location or something got changed, I need to make a change here as well. So I don't want to do that. So what is the thought? And I don't want to expose a direct, interaction is always not a good idea. So I want to bring something which manages my all services. Every services should get registered here. That is known as Eureka server. This server will have the informations of all 95 services. So this guy will talk to this guy, Eureka server. Okay. And this guy will further, talk to, one second, further talk to this guy. And then again, the response will go back to consumers. So that's the idea to bring. The Eureka will manage the routings, how to route, internal algorithm has been written by Netflix and Spring Cloud component. So they will manage your routing internally to route your request from one to another microservices. So this is how Eureka comes in the picture, Astos. या सो एग्जैक्टली सो जिस तरीके से आपने फिर से एग्जाम्पल लेके और बताया, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस तरीके नहीं से भी हुआ होगा तो कम से कम आइडिया जरूर लगा होगा। कल के डेट में जब इंटरेक्टिव सेशंस हम लेके आएंगे तो ये चीजें उनको और समझ में आएगी और बहुत ग्रेट लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग वाइडर हो जाएगी। तो आज इतना तो जरूर हुआ होगा कि कम से कम लोगों को समझ में आई होगी कि टर्मिनोलॉजी क्या है, बातें क्या हो रही हैं यहाँ पे। सो इस तरह की जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको नोट करके रख लेना चाहिए कि दिस विल बी हाईली यूजफुल एंड हेल्पफुल इन इंटरव्यूज और जॉब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। एंड जब हम अगले सेशंस प्लान करेंगे आज तो बिफोर इंटरेक्टिंग तो एक डेमो भी मैं लेके आऊंगा जिसमें कैसे माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं और कैसे यूरेका पे रजिस्टर करते हैं आप अपनी सर्विसेज, फिर कैसे यूरेका आपको रिस्पांस करता है। तो वो सब चीज मैं दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन में करूंगा इसके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन है जी। जूल एपीआई इसके भी रोल के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाते तो इट विल बी हेल्पफुल। मैंने बताया था कि 4 कंपोनेंट है, यूरेका, जूल, हिस्ट्रिक्स एंड रिबन। सो जूल क्या करता है बेसिकली, अब मुझे सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग भी करना है ना, कुछ सिक्योरिटी लगानी है, कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। तो उन सब चीजों के लिए आई एम गोइंग टू introduce one more concept called as Joule। अब क्या करता है ये भी राउटिंग है। तो मैं थोड़ा डिलीट करता हूं इसको। तो नाउ यू सी हियर दिस इज योर Joule। Joule is basically a API, it's a front line। नाउ यूरेका एंड जूल के बीच में कॉम्बिनेशन में बताता हूं, लेकिन उससे पहले अभी जूल पे फोकस करते हैं। तो जूल जो है आपका फ्रंट लाइन वॉरियर है। कितने भी रिक्वेस्ट आएंगे तो जूल
आप समझिएगा, यूरेका को थोड़ी देर साइड कर दीजिए। तो जूल इज नाउ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द रिक्वेस्ट, ठीक है। डायरेक्टली यूरेका को हमने थोड़ा देर साइड किया है, हम दोनों के कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन पे आएंगे, लेकिन पहले आप जूल की बात करते हैं। तो जूल एक एपीआई गेटवे है। किसी भी, जैसे आप लाल किला घूमने गए या, तो गेटवे आता है। आप अगर जहाँ लेट से आप मुंबई में जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, तो आपको अंदर जाने के लिए तो एक गेटवे एक ही है, उसके अंदर आप जाइएगा तो दिस इज द वन फ्रंट लाइन गेटवे फॉर ऑल द एपीआई गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब यूरेका का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर भूल जाना है। अभी हमारे लिए जूल आ गया है, जो कि एपीआई गेटवे की तरह काम करेगा। जितनी रिक्वेस्ट आएगी, कितने भी माइक्रो सर्विसेज से आए, वो सारी रिक्वेस्ट अब जूल के होके जाएगी। क्या फायदा है इसका? इसका फायदा क्या है? इसका, ये आपकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, ये आपका इंटेलिजेंट रेजिलेंस, ये सारी इंटेलिजेंट राउटिंग करता है, रेजिलेंस की सर्विसेज आपको देता है एप्लीकेशंस में। तो इन तरीके के जो फीचर्स हैं वो आपको यूरेका से शायद नहीं मिल पाते हैं। एक और चीज करता है ये, सर्वर साइड लोड बैलेंसर है ये। अब क्लस्टर आप कितने लोग जानते होंगे, उनके बारे में बात मैं करूंगा, लेकिन आज के लिए तो इतना ही कहूंगा कि ये सर्वर साइड लोड बैलेंसर का भी काम करता है, कि हमारी कौन सी सर्वर किस समय कितनी कहाँ से इंटेलिजेंट राउटिंग करना है, सो दैट हमारे को रिस्पांस उस इंस्टांस से बहुत इजीली मिल जाए। अभी बात करते हैं पहले इस एपीआई की और यूरेका सर्वर से। अब क्या इंटीग्रेशन होगा? यूरेका इज फॉर रजिस्टरिंग द सर्विसेज, जूल इज फॉर राउटिंग द सर्विसेज। सो अब कैसे बात होगा? कस्टमर जो कंज्यूमर एपीआई है वो जूल का इंस्टांस फेच करेगा। यहां से हमने जूल को रजिस्टर कर दिया है यूरेका में, और मल्टीपल सर्विसेज ऑलरेडी है। तो अब क्या है कि जूल ऑलरेडी रजिस्टर हो गया यूरेका सर्वर में, तो ये बंदा क्या करेगा? जूल के इंस्टांस को लाएगा, पहली रिक्वेस्ट। फिर दूसरी रिक्वेस्ट जब इंस्टांस उसको मिल जाएगी कि हाँ ये जूल है मेरा, तो ये दूसरा रिक्वेस्ट जो है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, वो इस पे जाएगा कि भैया मुझे नंबर ऑफ कस्टमर के लिस्ट चाहिए। तो इसको लाना है, तो इसके लाने के लिए पहले जूल का इंस्टांस फेच करूंगा यूरेका से, और फिर रिक्वेस्ट मेरी जाएगी कि फेच ऑल कस्टमर। तो जूल के पास रिक्वेस्ट आया, जूल ने क्या किया, जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी अब जूल के पास ही आएगी। बस आपको यूरेका से इसका इंस्टांस निकालना है, उस इंस्टांस के जरिए आप आगे की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो जूल अब फ्रंट लाइन है आपके सारे एपीआई का, और ये आप नेविगेट करेगा किस एपीआई के पास आपको भेजना है रिक्वेस्ट को। इसमें सिक्योरिटी भी लगानी है, फिल्टर्स लगाना है, प्री पोस्ट, ये सब मल्टीपल अलग अलग 4 तरीके के फिल्टर्स हैं हमारे पास। तो आपको वो फिल्टर करना है रिक्वेस्ट पे। तो जो कुछ भी करना है आपको, तो ये इंटेलिजेंट राउटिंग के अलावा फिल्टर्स भी लगाएगा, सिक्योरिटी भी देता है किसी भी रिक्वेस्ट को आगे भेजने से पहले। तो इन तरह की चीजें को आपको डायरेक्टली यूरेका were not able to suffice that, so Joule has been introduced, which API gateway की तरह हम जानते हैं इसको, और इसमें सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग का भी काम करता है। तो बहुत सारी फीचर है। यूरेका इज फॉर रजिस्टरिंग द सर्विसेज, Joule is not only the routing, also for filter, security and server side load balancer। आशुतोष जी, डिटेल में अगर आपने अभी ज्यादा नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, पहली सेशंस में शायद क्लियर नहीं हुआ, तो जब हम आएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो आपको समझाएंगे, और इंटरेक्टिव क्लासेस में होगा ही। तो इसमें आप कम से कम चीजों को समझ रहे हैं कि सुन रहे हैं पहली बार, वही आप गूगल करिए जाके, और फिर अपने आप को समझने की कोशिश करिए, बहुत हेल्प मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी चीजें एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है, हमारे इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि और भी क्वेश्चंस हैं बचे हुए। माधव जी, आपकी अगर आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। ओके, so we have had a decent talk on the components, Netflix components, microservices, Eureka, Zool API. Again, so what do you think? How we can manage client-side load balancing? So what should be the approach? How we usually basically manage? How they do it? Right. Managing client-side load balancing.
Okay. Okay. So uh, right now I'm deleting this for now. I'm coming to a topic called ribbon. So ribbon is another component which help you to manage a client side load balancing request. Okay. When I say that, then the meaning of that is कि आपने क्लस्टर इन्वायरमेंट देखा होगा, आपकी इंस्टांसेस बहुत जगह आपने डिप्लॉय किया है। आपका प्रोड्यूसर जो है, कई बार क्या होता है कि देखिए, आप 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 एज एन प्रोग्रामर, एज एन चीफ टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट ऑल्सो आप सोचिएगा कि आप ऐसा कभी डिजाइन नहीं करेंगे सर्विसेज कि आप लोकेशन स्पेसिफिक आपने डिप्लॉय कर दिया है ना। क्लाउड तो अब आ गया है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूं, अभी मैं ऑन प्रेम की बात करूं। तो कल के डेट में आपने सारी सर्विसेज यूएस लोकेशन में डिप्लॉय कर दी और वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो क्या होगा? खत्म हो गई कहानी, उस समय तक आपका रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आइडिया क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी में आप अपने सर्विसेज को डिप्लॉय करके रखते हैं कि कल किसी लोकेशन में कुछ हैसल्स हुआ, कोई कुछ प्रॉब्लम हुई, तो दूसरा डेटा सेंटर अप रहेगा और रिक्वेस्ट की सर्विसेज मिलती रहेगी। तो मल्टीपल इंस्टांस आप बना के रखते हैं उस जगह पे। तो आपने क्या किया, प्रोड्यूसर का दो, एक में मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया। श्योर, नो इश्यूज। सो देखिए, बेसिकली आपने बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, और कैसे वी हाउ वी डू दिस, बेसिकली मैनेजिंग client side load balancing. So this is particularly I want to say Astoji, one. can you hear me? Can you hear me? Yeah, this is audible. You are Okay. audible. But I am not able to move the mouse, but I am explaining what I can. Okay. Sure. If audible Okay. then. Okay. Okay. So the ribbon basically the component which can okay, now I'm able to operate. So you can see my screen, Astoji, now. Yes, we can Okay. see now. नाउ मैं यहाँ पे ही क्या करूंगा, कस्टमर कंज्यूमर जो है, यहीं पे मैं रिबन की टेक्निक्स को यूज करूंगा। यू नो, पहले मैं डिस्कवरी क्लाइंट करता था कि यूरेका से निकाल के लाए, डिस्कवर करे। अब मैं यहाँ पे रिबन को के कंपोनेंट, कुछ एनोटेशंस है हमारे पास, उसको मैं यूज करूंगा। और मेरा ये जो कंज्यूमर है, वो रिक्वेस्ट भेजने से पहले ही इसको पता होगा कि मुझे किस इंस्टांस पे भेजना है। लेट्स से प्रोड्यूसर का P1 एक है इंस्टांस और एक P2 है, ठीक है। तो अब ये कंज्यूमर को रिक्वेस्ट करने से पहले ही पता चलेगा कि मान के चलो P1 जो है अभी 50,000 रिक्वेस्ट को सर्विस दे रहा है, देन दैट मीन्स दिस इज हाईली ऑक्युपाइड। If I will send another request here, then the response of that request will be much slower. So what I will do, this consumer will be diligent enough to send the request in such a way so that the free and less occupied instance will be handle the request. तो इसको पता होना चाहिए कि अभी किस इंस्टांस पे कितना ज्यादा लोड है। तो मैं अब क्लाइंट साइड पे ये लोड बैलेंसर का जो कॉन्सेप्ट आया है, तो क्लाइंट को पहले ही पता है कि भैया, हम कंज्यूमर को पता है कि हमारा रिक्वेस्ट किस पे जाना चाहिए। तो ये अपने अल्गोरिथम के हिसाब से जो लेस ऑक्युपाइड इंस्टांस होगा वहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा, जो इसके जरिए रिस्पांस इसको जल्दी मिलेगा। सो ये कॉन्सेप्ट होता है क्लाइंट साइड लोड बैलेंसर का, जिसको अचीव आप कर सकते हैं रिबन के जरिए। और रिबन नेटफ्लिक्स स्प्रिंग क्लाउड का एक कंपोनेंट है जिसको आप यूज करेंगे। मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा तो आपको इसका भी दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ये जो क्वेश्चंस हैं, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, है ना। सो लेट्स हैव करेक्ट। मोर अटेंशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई वांट टू आस्क। अगर किसी के और भी क्वेश्चंस हैं तो दे कैन गिव इट इन चैट बॉक्स। वी विल सर्टेनली consider it for next sessions. But for today, the last question what I have for today is about fault tolerance mechanism given by Netflix. So what do you think, Mr. Madhav Misra? What will be the fault tolerance mechanism given by Netflix?
ओके, सी फॉल्ट टॉलरेंट नाम से ही काफी क्लियर है कि कभी कोई फॉल्ट आती है तो उसको कैसे यू विल ओवरकम फ्रॉम दैट, राइट। आपके पास 100 माइक्रो सर्विसेज डेवलप और डिप्लॉय हो गई है, बट गिवन अ टाइम कभी कोई प्रॉब्लम आया, कुछ दिक्कत आई उस माइक्रो सर्विसेज में, या आपका कोई माइक्रो सर्विसेज डाउन हो गया, तो कैसे आप उससे ओवरकम करेंगे? यही एक फॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म होता है कि कितनी स्ट्रांग आपने बनाई हुई है, हाउ यू हैव डन दैट। सो इसमें कॉन्सेप्ट है हिस्ट्रिक्स। बेसिकली इट्स अगेन अ कंपोनेंट नेटफ्लिक्स का, जो हमारे पास एज ए हिस्ट्रिक्स हम जानते हैं उसको। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सर्किट ब्रेकर। तो हम क्या करते हैं कि मान के चलो आपके पास 95 माइक्रो सर्विसेज है, और लेट्स से कंज्यूमर इज रिक्वेस्टिंग फॉर 30th नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज, एंड 30th नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो मामला फंस जाएगा ना। तो इससे ओवरकम करना है, यही तो फॉल्ट हो गई, कुछ प्रॉब्लम आई, उससे कैसे निकलना है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लाया, हिस्ट्रिक्स एक कंपोनेंट है जिसमें एक सर्किट ब्रेकर नाम का कॉन्सेप्ट है। तो जरूर आप लोग जाइएगा, गूगल करिएगा, पढ़िएगा, फिर आप जब डेमोन्स्ट्रेशन में आएंगे तो और समझ में आएगी, नहीं तो इंटरेक्टिव में समझाऊंगा डिटेल में। तो हिस्ट्रिक्स क्या कहता है कि आपको कैसे उस सिचुएशंस में हैंडल करना है रिक्वेस्ट को। तो वहां पे हम कुछ रूल बना देते हैं कि भाई अगर 4 मिली सेकेंड से ऊपर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप फलाने, एक डिफॉल्ट मेथड मैंने बना दिया है सर्किट ब्रेकर का यूज करके, हमने उसमें उसके उसको नेविगेट कर देते हैं, सो दैट जो मेन सर्विस है वो अगर अप नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो डमी सर्विस के पास चला जाएगा, और डमी वाला जो सर्विस है उसको रिस्पांस देने लगेगा एज ए डमी रिस्पांस, सो दैट रिक्वेस्ट रिस्पांस डेडलॉक में कभी नहीं जाएगा, है ना। या इसमें आप पैटर्न भी बना सकते हैं कि चलो ठीक है, पहले रिक्वेस्ट के लिए फेल हो गया, दूसरे के लिए फेल हो गया, तीसरे के लिए फेल हो गया, नंबर ऑफ 10 रिक्वेस्ट इट हैज बीन फेल, तो आप नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए आप एक डिफॉल्ट डमी सर्विस के पास उसकी रिक्वेस्ट को नेविगेट करने लगते हैं। तो ऐसा भी कंडीशन सिचुएशंस आप बना सकते हैं कि मान के चलो एक बार सर्विस को रिस्पांस मिला, बट फिर से वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो इन सब सिचुएशंस में आप एक डिफॉल्ट मेथड्स को बनाते हैं, और वहां से आप अपनी सफाई करते हैं रिस्पांस को। दिस इज हाउ द हिस्ट्रिक्स कम्स इन द पिक्चर, एंड एंड सर्किट ब्रेकर आल्सो कम्स इन दैट। सर्टेनली, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बताया आपने। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो आई होप फ्रॉम द नेक्स्ट सेशंस we will discuss more on these things, important things, which will certainly help people for jobs, for even people who are doing startups, searching for projects. Edu Shakti team is always ready for you in all respect. So आप जॉब खोज रहे हैं, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आप इंटर्नशिप जो यंग लोग हैं खोज रहे हैं, या आप कंपनी चला रहे हैं, आपको अच्छे लोग चाहिए, इफ यू नीड गुड डेवलपर्स, गुड रिसोर्स फॉर योर प्रोजेक्ट, आप फ्रीलांसर हैं, प्रोजेक्ट खोज रहे हैं, या आपके पास प्रोजेक्ट है, यू आर सर्चिंग फ्रीलांसर, सो इन ऑल रिस्पेक्ट, in all way, Edu Shakti team is helping a lot of people actually. So इस चीज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो आज के सेशन के लिए भी फिर से देखिए, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये जो नेटफ्लिक्स के कंपोनेंट है, ये बेसिकली बड़े ही यूजफुल हैं जब आप रियल एप्लीकेशंस बनाने जाएंगे, जब आप सही में इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आपको ये सब चीजें की बहुत जरूरत पड़ेगी, यूरेका, जूल, हिस्ट्रिक्स एंड रिबन का। स्प्रिंग बूट तो आना ही चाहिए, ये तो प्राइमरली चीजें हैं। तो स्प्रिंग बूट के बिना थोड़ा अचीव करना
नहीं हो पाएगा, आपको वो आनी चाहिए। और जब आप बनाने लगेंगे, जब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखेंगे, तो ये सब बहुत हॉट डिमांडेड टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपकी नौकरी भी मिल जाती है, और बहुत नौकरियां मिल जाएगी आपको, अगर द वे यू विल एक्सप्लेन, द वे you will understood the concept. So these things will make a lot of differences. Try to learn and go in the deeper of it. Next time when we will connect, we will talk more in details. I thought to bring this topic so that you will have the resilience, you have the idea how, what is the name of these, all these components, and then further you can do yourself, you can Google it out, you can try to research, you will do learning and all this, then you will certainly come back and then you will understand more. Thanks for watching us, and thanks Astoji for giving the time. ओके, थैंक यू सो मच। पूरे एडू शक्ति टीम को फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हैव ए गुड डे। Thanks guys, thank you.